Hey Pragati, welcome to telechacker.com. Thank you so much for having me over, all of you. Thank you so much. So how does it feel being in the den of telechacker.com? Well, the question that I've been asking you, आप लोगों को सारी खबरें कहाँ से मिलती हैं? Sources बताइए. वही आप मुझे बता नहीं रहे हैं. मैं बहुत देर से आपके sources पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ. So of course it's a wonderful feeling. And of course it's a whole young team. I didn't expect that young people figuring it out all for us. So yeah, it's interesting. So I guess that's the reason the flavor and the page has started looking pretty vibrant. You're talking all positive about telechacker. So tell us, how has been your association with us? My association with you has been pretty interesting. Of course आप लोगों ने मेरे बारे में लिखा है, कई बार बहुत अच्छा लिखा है, कई बार उतना अच्छा नहीं लिखा है, कई बार मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और कई बार कंट्रोवर्शियल बातें बोल जाती हूँ, तो आपके लिए तो मज़ा हो जाता है, कई बार वैसा भी हुआ है. एंड ऑल्सो I've had some very interesting association in the terms की मैंने किसी वेबसाइट के लिए अगर कभी लिखा है तो वो आप लोगों के लिए लिखा है. I used to write a small column called Pragati Speaks बसंती की बेटी. So that is an interesting जैसे कहते हैं memory and some interesting stuff I've written. Some serious stuff कुछ बिल्कुल ही बकवास, but वो एक अच्छा दौर था. Otherwise you guys have generally been nice to me. So अभी तक मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं. And randomly actors or media, they're always on loggerheads. So what do you have to say on that? I don't think always we are on loggerheads. जितनी आपको हमारी ज़रूरत है उतनी हमें भी आपकी ज़रूरत है. लेकिन कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी ज़्यादा पर्सनल किसी को लगता है कि मुझे अभी बात नहीं करनी है, लेकिन फिर मुझे अगर अभी बात नहीं करनी है तो आपको अभी ही छापना है, तभी आपके लिए वो इंटरेस्टिंग है. तो वो वाली जो स्पेस है वो कभी कभी शायद डिफ़िकल्ट हो सकती है और हो जाती है. उसके अलावा आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई मतलब दिस इज़ वन लव अफेयर विच वी ऑल हैव टू हैव, वी लव टू हैव. And what has been Pragati doing? We've not seen her on screen. Yes, that's right. I have actually been off screen since January. I quit Uttaran in August. Then I was doing Dode Lake Jaan. That went off air. So ये 3 महीने का जो मेरा sabbatical रहा है, I have actually done something that I have studied. I've studied to be a fashion designer, जो कि मैं एक टाइम पे करती ही थी, फिर छोड़ छाड़ के रेडियो किया, टेलीविजन में किया. So I'm back to doing that. I've started a line of designer sarees under the brand name called Rhapsody. So ये 3 महीने में I have put out that line. We are online. Our presence is completely online as of now. I do my first exhibition on 31st of May. So ये 3 महीने की छुट्टी में मैंने वो किया है. So let's see how it goes. And apart from putting out a line, you actually shed out a lot of weight. Tell me the secret. So actually ये shed of weight तो बहुत मतलब साल भर से चल रहा है. आप लोगों ने notice अब किया है शायद. You know the progress has been pretty slow, but I guess it's hopefully a good progress that stays that way. I think I needed. I have always been a plump person. मुझे कभी अपने होश में याद नहीं कि मैं पतली थी, तो जो कि मैं अभी भी नहीं हूँ. But yes, as they say, as you grow a little older, you have to pay a little more attention to your health. So I got into that space. Luckily, it gets noticed more for reasons of vanity than for anything else, which is absolutely fine. I am absolutely okay with that. किया सिर्फ इतना है जो कि बहुत अजीब लगेगा कि बहुत properly खाना शुरू कर दिया है. Just that. और सब कुछ खाना शुरू कर दिया है. So I guess that is what is worked. And Pragati, you've always done quite strong roles. So abhi, you planning to make a comeback to the TV screen? Of course, I have not gone anywhere. I am just waiting for somebody to realize that, oh, we need to get her back. It's just like that. Strong roles, I have generally played negative roles. Uttaran was my only positive role. And surprisingly, also my calling card. So obviously, सबको ऐसा लगता है कि I played only positive roles. But आप कुमकुम देखिए तो I was the main negative lead. उससे पहले I was doing मंशा, मतलब you know stand out shows, again a main negative lead. Dode Lake Jaan, again main negative lead. So I am completely open to doing positive or negative roles. But हाँ, role character में कुछ तो होना चाहिए करने के लिए, और फिर शायद उसका definition ये हो जाता है कि there are strong roles. So and which actor would not want a strong, powerful role? छोटी बहू main negative lead. So बट the only thing is that they happened along with Uttaran. तो एक तरफ जहाँ मेरे को बिल्कुल ही सती सावित्री अच्छी मम्मी की तरह देख रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ आपको out and out. And I have always done characters black. They are black. They don't have a reason. There are no shades of grey. There are no justifications कि ऐसी क्यों है. वो खराब है बस period. So उस हिसाब से as an actor they have been you know great. कि आप एक तरफ you're so positive, you're so nice, and you're this typical nice mummy which everybody wants to have, and then you are this bad person without a reason. कोई कारण नहीं है, बस आप बुरे पैदा हुए थे, आप ऐसे ही.
So out of all the bad characters that you played, which was the most challenging one? Most challenging, I'll honestly tell you, was Bodil Ek Jaan, because ये एक महाराष्ट्र बैकग्राउंड पे कैरेक्टर था. इसकी स्टाइलिंग बहुत ही डिफरेंट थी. इतना दमदार और इतना खतरनाक कैरेक्टर मैंने कभी नहीं किया. छोटी बहू भी बहुत खतरनाक कैरेक्टर था, लेकिन इतना खतरनाक नहीं था. ये तो बिना बात के चाकू उठा लेती है, गोली मार देती है, लोगों को उठवा देती है, टेररिस्ट आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है इसके साथ, और क्यों करती है वो मालूम नहीं है. So in terms of styling, in terms of language इतना नहीं किया, because at the end of the day it's Hindi serial, so you have to keep it okay. But in terms of styling, in terms of character, this was the most Tamina character I played. And with very young actors coming up doing leads, do you actors actually feel a threat? See, threat का सवाल पैदा नहीं होता, because मुझे नहीं लगता कि ऐसी कहानियाँ आ रही हैं जहाँ पे आप 35 प्लस एक्टर्स को लेके मेन लीड्स लिख रहे हैं और फिर आप 20 साल के लोगों को कास्ट कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. इन रिसेंट टाइम्स उस कैटेगरी में आई थिंक सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं शो आया, और उसमें आपने उसी कैटेगरी के एक्टर्स को कास्ट किया. सो कहानियाँ उस दौर में उस जॉनर में नहीं लिखी जा रही हैं, तो थ्रेटन होने का सवाल नहीं है. हाँ, जब आप कहानी एक 35 साल के किरदार की लिखेंगे और आप 20 साल के एक्टर को कास्ट करेंगे, तब थ्रेटन शायद होने का सवाल उठता है. बट अगर आपकी कहानी में आपका लीड 20 साल का है, तो फिर ऑब्वियसली वी आइडियली कांट बी पोर्ट्रेइंग दैट. सो and it also happens in films. At the end of the day, actors जो 10 साल पहले काम कर रहे थे, वो आज आपको वही, even अगर शाहरुख आज हमारे, she's still the reigning superstar, लेकिन आप उनको कॉलेज बॉय नहीं देखते. उनकी कहानी में वो थोड़े से और matured कैरेक्टर प्ले करते हैं, या you know, so that transition has happened. So until unless that happens in TV and a wrong casting happens, वो तो हो नहीं रहा है. हाँ, लेकिन टीवी का ये ज़रूर है कि आपके प्रोटैगनिस्ट 20 साल के हैं, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पावरफुल कैरेक्टर है वो 45 है या 40 है. बीच का जॉनर डेफिनेटली नहीं है. सो आइदर यू आर 20 years old or you're 40 years old. So whether if you're not even 40, you have to play 40. It's like that. And how much of change have you seen in the industry all these years? Oh, surprisingly, I think I came in 2001. That was the time where the so-called Saas Bahus had taken off only. So it was very centric where आपकी stories kitchen politics में थी. उससे पहले का दौर we had seen Saas, we had seen the shows that you remember were Bunyad or Hum Log, the standout shows, or the whole lot of comedy genres which was your weekly on Doordarshan and things like that. तो बहुत ही story oriented थे, कोई कहानी set नहीं थी. Then came this whole kitchen politics which was lapped up by people. मतलब किसी को ये कहना कि इतने सारे लोग पागल नहीं हो सकते हैं. सो ऑब्वियसली जनता को बहुत पसंद आ रहा था. आई थिंक व्हाट गॉट टू द पीपल वाज द मोनोटनी, वाज नॉट द स्टोरी. अगर वो एक ही कहानी चलती तो वो शायद आज भी चलती रहती, पर वो ऐसा हो गया कि 15 कहानियाँ वही चलने लगी, तो लोग इसलिए बोर हो गए. उस एक कहानी से किसी को नहीं, मुझे लगता है अभी भी प्रॉब्लम है, पर 15 कहानियाँ वही दिखाएंगे तो शायद उससे प्रॉब्लम है. देन केम द सेकेंड फेज ऑफ टर्न अराउंड विच वॉज बालिका वधू पुत्र, एंड लकीली आई वॉज पार्ट ऑफ वन. So that saw a different genre. In terms of work, it's lot more tougher, but also lot more streamlined. मुझे याद है जब मैंने 2001 में बॉम्बे में आई थी और मैंने काम शुरू किया था, हमारी सेट शिफ्ट्स नहीं होती थी in the sense, and they could get extended, and we used to work. But तब ये भी नहीं होता था कि 12 घंटे काम करना ही करना है, ऐसा भी नहीं था. हम 8-8 घंटे भी काम करते थे. तो it was fluid that ways, and it was tougher. So dailies were not so much. I remember I worked with the BR films on episodics and things like that. We used to shoot episodics for 8 days. One episodic, 1 hour episodic. हम 8 दिन शूट करते थे और बहुत अच्छा आउटपुट निकलता था. And we used to have a lot of fun. मतलब लंच ब्रेक हुआ, अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, आज के टाइम में आप वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि आप शायद आज शाम का एपिसोड शूट कर रहे हैं. So the time constraints are completely different because the format has changed. And what does Pragati likes to watch on TV? I actually watch a lot of TV. Because I believe that this is the business I belong to. It's not only about enjoying, it's also about knowing कि क्या हो रहा है. But अगर आप मेरे favorite shows की बात करें तो given a chance, I generally do not miss Balika Vadhu. I have not missed it from day one. I don't know why, but I haven't. That's been one show I have been hooked to for a very long time. But I don't watch it every day. Whenever I get a chance, I do. Otherwise, my favorite shows, I watch a lot of Fox television. I am a completely travel and food show buff. तो ईट स्ट्रीट के बारे में आप मेरे से कुछ भी कहानी पूछ लीजिए, मैं आपको सुना सकती हूँ. I was very very addicted to Friends. Now I'm also addicted to 2.5 Men. I actually prefer comedies and travel shows more than. But I'm not your fan of
गेम ऑफ थ्रोन्स ये वो, आई विल वॉच देम एट विल. ऐसा कुछ नहीं कि एडिक्शन, लेकिन मुझे ड्रामा देखना है या मुझे थ्रिलर सीरीज देखना है, ऐसा कुछ नहीं. Once in a while I do watch all that. So do we actually get to see Pragati doing a comedy role sometime in future? I would love to do a comedy. I started my career with a comedy show, but again it was in Delhi. So I've been a radio jockey. I've been told I have a knack of comedy, which comes very naturally to me. लेकिन आज तक किसी ने मुझे कभी कॉमेडी में कास्ट नहीं किया. शायद शक्ल से मैं खड़ूस लगती हूँ. I don't know. Possibly. So I'm waiting कि किसी को ऐसा लगे कि नहीं कॉमेडी में ट्राई करते हैं. I would love to do comedy. I've done a lot of pilots, but they never. कहते हैं पायलट तो हम करके रह गए ना. It never came out. But I've done some really good stories in terms of pilots for comedies, but somehow they've never seen the light of the day. And our readers actually want to know, is Pragati single? पहले ये बताइए मुझे शादी कौन करने वाला है. Well yes, I am very much single. और अब आपने सवाल पूछ लिया है तो फिर सिंगल से मिंगल करवाइए मुझे और डबल कीजिए, करवाइए मेरी शादी. भी द मैच मेकर. Pragati, I want to know what all hardships have you gone through throughout your journey, or have you? See, hardships, I'll be very honest, there are two types of hardships. One hardships is which happen because you have to survive in a city, which is also a hardship because it's very important. And one hardship is that you see yourself somewhere. I can name a lot of actors who come from beautifully successful backgrounds, very secure backgrounds, but they don't see themselves in terms of the work they want to do. तो आप उनसे पूछेंगे तो उनको वो भी hardship लगेगा और शायद वो आपके point of view से struggle ऑडी में करते हैं तो एक आम इंसान कहेगा ये किस तरह की hardship है भाई, लेकिन वो पैदा ही ऑडी में हुए हैं तो उनके लिए वो hardship नहीं है, उनके लिए वो life है. उनके लिए hardship है that I want to be an actor, I want an award, I want a national award, I want to do a film, I want to do a main lead, and I'm not getting there. So that's the hardship. Of course, you see yourself doing a lot of stuff. So for me, my hardship would say is more in the second genre. That, of course, survival is an issue. It's not that, but survival has not been an issue. That way I'm blessed. I come from a family where नहीं भी काम करूँगी तो वो फर्क नहीं पड़ेगा. But आपको कहीं पे अपने आप को देखना है, अपने करियर को देखना है. सो दैट वॉज अ स्पेस दैट आई सॉ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज आई हैव हर्ड दीज थिंग्स दैट गाड़ी में स्ट्रगल करती है. स्ट्रगल क्या होता है? बट वो गाड़ी मेरी नहीं थी ना, मेरे बाप ने मुझे दी थी. जाओ बेटा जाके स्ट्रगल करो, जो तुम्हें करना है लाइफ में तुम करो. सो दैट स्पेस इन द सेंस. सो मेकिंग अ करियर आउट ऑफ, मैंने अपनी गाड़ी तो बहुत लेट ली बट अब मेरे डैड थे जो मुझे दे सकते थे तो मैं क्यों नहीं लेती. मतलब इट्स लाइक दैट. सो दैट स्ट्रगल वॉज नॉट इन माई लाइफ बट the struggle to own my first car myself, that was there. So will you come back in Uttaran? No, I will not come back in Uttaran. There was already a replacement that has happened for the character. तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए वहाँ इस वक्त कोई जगह है. And I wish Uttaran good luck because everything said and done, Uttaran has been my calling card. So मैंने Uttaran से पहले भी बहुत काम किया, Uttaran के बाद भी बहुत काम किया, लेकिन आज भी Uttaran is my identity and I just can't take that away from it. What are your aspirations like in terms of your career? See, aspirations for an actor is to do good work, to do great roles in terms of कि जो आपको याद रहें. चाहे आप अगर आपको मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्म याद है तो आपको शेफाली शाह उस फिल्म में कितनी अच्छी तरह याद है. फिल्म में उनका इन टर्म्स ऑफ मतलब लेंथ नहीं था लेकिन फिल्म का पूरा मुद्दा उनके किरदार पे था. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से व्हाट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बट आइडियली everybody wants to be part of shows where you are remembered. You want to do work that people can relate to, they can refer to. So yes, and I think everybody thinks that I am better off doing central characters, important characters. I think that's an aspiration an average normal person lives with. So I think I'm normal till now. पागल नहीं हुई, so it's okay. You can just conclude it with a message for our readers. Well, telechecker.com को मैं बहुत सालों से पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ. कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि कुछ बुरा तो नहीं लिखते मेरे बारे में, तब भी इनका ध्यान रखती हूँ. आई ऑल्सो कीप आई ऑन देम. लेकिन आप सब पढ़ते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि आप जितनी बार साइट पे आते हैं, जितनी बार आप आर्टिकल्स को लाइक करते हैं, उतना अच्छा काम ये करते हैं. और क्योंकि अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, आप बार बार इनकी साइट पर आते हैं, तो ये हमारे साथ अच्छे रहते हैं. तो अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो इनकी साइट पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आते रहिए. एंड शावर अस विद योर लव. थैंक यू सो मच. Thank you, Pragati, for being with us. Thank you.